รามานานวกรรมกรรมกาตยากังทันเตสุทังตริดินาจิตาวะมุนินโดตังเตตัสสะภะวะตุเตจยามะกาลานินาลาติริกัจจวราอติมาตะโพจังตาวันติจังธรรมสเยวสุดารุลันตังเนตังตุเสกวิตินาจิตาวามุนิโลตันเตจัสสะภะวะตุเตจยามังกาลานิอุทิกะกะธรรมติอาตัสสุตารุนันตังภาวันติโยธรรมปะทังกุลิมาตวันตังอิเตวิสังขะตมโนจิตาวะตุนินโดตันเตจัสสะภะวะตุเตจยามังกาลานิตัตวะกะกะสมุตระอิปะกะวินิยะจินตายะตุทวัจนะจนะกายะมันเจสันเตนะโสมะวิตินาจิตาวะมุนินโตตังเตจัสสะภะวะตุเตจยามังกาลานิสัจจังวิหายมติสัจจะภวะทัเตโกวาดาปิโรปิตมหังอธิอังกภูตังปัญญาปฏิปัจจลิโกจิตวา
like to convey my respectful greetings to all the Sangha participants of this Global Buddhist Conference of 2020, and my blessings to all the organizers and the lay supporters who have made this possible, and wish my very best for the success of this conference. It's not easy. I don't find it particularly easy at all to use Zoom and all these modern messaging media, but there's little choice, and it's better than nothing, and something to be grateful for. This is a global conference, so in this time when we can't travel around so easily, it does afford an opportunity for a sense of harmony and togetherness, and sharing and giving encouragement to each other. And the institution which is organizing this conference, the Lokuttara Buddhist Training Center, is one that in its name expresses the meaning of the essential import of the Visakha Puja. It's we recollect the day on which the Bodhisattva realized enlightenment and realized the Lokuttara Dhammas. And those Lokuttara Dhammas are timeless, is a timeless Dhamma, and it's something that any one of us in this day and age can realize if we faithfully pursue the Eightfold Path which the Lord Buddha laid down for us. So I would just like to express my anumodana and appreciation for this event, and to wish that all of you will receive great benefit from it, which will help in your own practice of sila, samadhi, and panya, and in your efforts to propagate the Dhamma throughout Buddhist communities in every continent of the world. Thank you. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Nuttarang Pachayang Namasami. So I'd like to offer my respectful greetings to any members of the Sangha who may be watching this video today, and my blessings to all the lay Buddhists. So we are in unprecedented times. This week we'll be celebrating the Visakha Puja, and for the first time since I came to Thailand 40 more years now, we'll cancel the circumambulation, candlelight circumambulation, and monasteries throughout Thailand, throughout the world are closed. In many places the monks are going on alms round, and everything seems to be on pause, sort of been suspended
animation, everyone's perception of the passing of time has been distorted. But Visakha is a good opportunity, I think, to recollect that there are certain things that change, or everything, almost everything changes. But there is the Akalika Dhamma, which is the Dhamma which is timeless. And that it is in our aspiration to realize the deathless, the timeless, that we cultivate the tools, the virtues that enable us to live within the world of change in a way that we can both create happiness and true welfare for ourselves and for others. So change is the one most important object or subject of our study as Buddhists. We don't put the same emphasis on faith in dogmas that most other religions do. Our emphasis is on study, education, cultivation, development of our understanding of ourselves as human beings and the world we live in. This is our primary task. And the more that we look at our body, our mind, the more we look at the world we live in, the more clearly we see anicca, the more clearly we see change. And we become more sophisticated and aware of the different kinds of change that take place. That is to say, that can be very slow, steady, predictable kinds of changes that take place, and there can also be sudden, unpredictable changes. Merely observing the variety of kinds of change already gives us a certain level of wisdom, that we don't expect things to change only in the orderly, predictable way and feel overwhelmed or panic-stricken or angry when things change in the unpredictable, unexpected ways. You say, yeah, that's change. It's like this. The world is like this. The body is like this. The mind it's like this. Things are changing, and understanding change is something that we need to give greatest importance to. But it's not just the fact that things change, but also that they change according to causes and conditions. This is not a random change, or these are not changes that are part of the plan of a creator God. These are changes that take place through a very complex, unimaginably complex web of causes and conditions. But in this huge web of causes and conditions, we only really need to be interested or give our greatest amount of time to those changes which have an effect on our mind and body. And Buddha taught very simply that
We suffer because of ignorance and the cravings that arise together with ignorance, and that we free ourselves from suffering through the abandonment of defilement, which is affected through the Eightfold Path. And this path from suffering to liberation from suffering to being caught up with and carried along by the stream of change, to the realization of the timeless and the deathless. This is a possibility. It is a potential for all human beings, from whatever country, from whatever continent they come, whether men or women, young or old, rich or poor. And this is one of our key Buddhist convictions, that we all bear within us the potential for enlightenment. And on the Visakha day, 2,500 and more years ago, we can say that the Bodhisattva realized enlightenment, became Buddha as a representative of the human race. He proved through his enlightenment that enlightenment is a possibility. It is a realistic goal to aim for in life. So our conviction, our belief in the enlightenment of the Buddha implies, I would say, a belief in the potential for all human beings to realize enlightenment. And that also, nested within that, there is perhaps the most important insight or understanding, and that is that we, each one of us, bears within us that potential. And we can begin to put that conviction, that belief to the test by trying to abandon the unwholesome, develop the wholesome, purify the mind. And every time that we are able to abandon the unwholesome or develop the wholesome, even in the small, mundane matters, then reminding ourselves that this is added proof that we can do this. It's not beyond us. And we're looking very closely, we're putting our effort is into putting to the test those things that we take on faith or on trust. And the more we practice, the more we see the results of practice, then the stronger our conviction grows. So our faith is not in things that we have no possibility of ever realizing as a direct experience, but our testing of our faith can occur throughout the day, every day. And we look at the body and we look at the mind, and we see what? We see things arising and passing away. And we see the arising of defilement in the mind, for instance. Now in the this year, people are having far more time to be by themselves, probably other than monastics or
dedicated meditators, probably more than ever before. And that can be both a blessing and a curse, in that without right view, the habit accumulated over countless lifetimes is to assume and to believe, we can say superstitiously believe, that every mental state is who we are. And so without the right view that the Buddha taught us, people can become overwhelmed by the negative mental states that they discover when they are suddenly deprived of all means of distraction. For Buddhist meditators, we have the advantage of our initial belief that mental states are not self, they're not who we are, they don't belong to us. But in the practice now, we're looking very closely. Is that true? And we can see that in a second before, you have a sort of fear, anxiety, confusion, doubt, anger. The second before that appears in your mind, you have absolutely no conception that that will arise in your mind. There it is. Suddenly it's there. And if your mindfulness is very sharp, you will observe that initially there is no sense that that is who you are, that that is your mental state, your weakness, your fault, but that there is a grasping onto the mental state. And then there is a adding on to a proliferation of the mental state, making a story out of it. And this clear seeing is what allows us to let go. It's not we're trying to persuade ourselves that mental states are not self in order to be a good Buddhist, but we're taking the hypothesis and putting it to the test. And we're looking very closely. You see, yeah, it just arises. And it stays for a while, and then it passes away. And then we observe also the state after it's passed away. So close, interested, relaxed observation, without wanting to feel anything, without wanting to get rid of anything, but just looking and having that relaxed, interested, curious kind of looking like say like a child. You take a child to the zoo the first time, and a child looking through the cages at all the strange creatures. That's how you look at mental states. You know, it's just they can't get at you. They're behind bars. You know, you just look at them, and as long as you don't climb through the bars and grab onto one, it can't do anything to you. You're just looking at it. So interest, curiosity, enjoyment, and mental states that arise. Why do they arise? Well, because they've arisen in the past. You've indulged in them. You've identified with them. You've been fooled by them in the past, and that's the karmic energy which leads to them reappearing in your mind. But when you're simply watching and not adding on to them, and not fighting with them, not being oppressed by them, then they lose a little bit of energy. Each time you do that, you fade away. So when we see this, we don't have to fear. You know, it's not just that anxiety is suffering, but
the fear, not wanting to be anxious, and feeling overwhelmed by anxiety. It's like adding poison to the arrow in the Buddha's simile. So yeah, it's like this. This is what anxiety is like. This is what feels like this. Feels like this in the body. It feels like this in the mind. And we don't add to it. We can watch it pass away. Oh, it arises and passes away. And we can see that the more we do this, then the more the mind is impressed by the process rather than the content of mental states. So there are two aspects of mental state. There's what the content of it is, how it feels, or what the thoughts that constitute it are. And there is the other aspect is that it rises and passes away. And the most exalted mental states, the most awful, nasty mental states, seen as processes, they're just one thing. They arise and they pass away. So we're developing this ability to see, to understand, penetrate the nature of things. But our ability to do that is dependent upon how we take care of our body, our speech, and our mind, and regular chanting, meditation practice in order to learn the skills of focus and developing the strength of mindfulness and sampajanya, clear comprehension, and atapi, it's like appropriate effort, not too tight, not too loose. These are skills that we need to develop, how to protect the mind from unarisen, unwholesome dhammas, to let go of arisen, wholesome dhammas, to bring into the mind, to introduce into the mind wholesome dhammas that have not yet appeared, learning how to take care of those that have appeared. So these are all ways in which we are bringing the mind to a sense of maturity and readiness, and a strength and a flexibility, and an integrity which allows the wisdom to penetrate deeply within us. So we have these teachings. The teachings are all the teachings that we need to follow in the footsteps of the Arahants, the footsteps of the Buddha himself. We are in a fortunate position of having access to those teachings. The great monks and nuns and practitioners over the past 2,000 more years have preserved these teachings and transmitted them and put them to the test and proved through their lives that they are timeless. It's not just that beings with great spiritual potential at the time of the Buddha could follow in the Buddha's footsteps, but this teaching is the truth of the body and the mind, and the truth of what creates suffering and what alleviates suffering. And thanks to the efforts, goodness, and kindness and compassion of countless beings over the past centuries, then we have this opportunity to apply these teachings to our own life, and then to share what we have realized with others. So Visakha Puja is a day where we can reflect on this and our debt of gratitude to the Lord Buddha, debt of gratitude to the teachings, and debt of gratitude to the Arya Pugala, the Sangha of enlightened disciples who have taken care of his teachings and preserved them
for all of us. But our duty as Buddhists is not simply to feel that sense of gratitude, but to try to repay that gratitude by applying those teachings. So the changes that are taking place, they're just change. The challenge of adapting to the changes brought on by the coronavirus are in essence no different from the changes that are taking place in our life at any time. It's learning how to cultivate our body, speech, and mind in the best possible way. There are all kinds of questions ahead and unresolved issues in the world, and nobody really knows what the world's going to be like after this virus has disappeared or has been reduced to a manageable level. And right now, it's nothing more than speculation. But what we can take responsibility for, and we could, is what we can do. What can you do right now, this morning, this afternoon, this evening? Not what might happen or what you might be able to do in the future, but in this particular time, this particular year, then let's put our effort into the present moment and creating the causes and conditions for acting in the most mindful, wise, compassionate way possible in the future. So I would like to offer my best wishes and blessing for you all to grow in dana, sila, pavana, for the members of the Sangha, for sila, samadhi, panya. May you be able to put to the test of your own experience all of the teachings of the Buddha, and to ultimately realize the timeless, the deathless truth that the Buddha himself realized on the day that we now celebrate as Visakha Puja. So on this auspicious
recognize that is Visak, or the Thai people call Visakha. So for this particular time, the Thai people and also the rest of the Buddhist countries people cannot attend or doing that. But before we get into that, sir, so what is Visak Day, sir? Vesak Day is the most important day in the Buddhist world. Just like Christmas Day in Christianity. In Mahayana country that is in the northern part of Asia, they regard Vesak Day as the day of the Buddha Day. Because this Vesak Day, Vesak means the 6th month in the lunar calendar, 6 months of lunar calendar. So Visakha Puja in Thailand, Puja means worship. Worship in the 6 months of lunar calendar, Vesak. That means there were significant, very important events related to life of the Buddha in the 6th lunar month. That's why the Buddhists all together worship the Buddha in this 6th month, the 6th month of lunar calendar. What were the events related to the life of the Buddha? Most of the Buddhists think about his birthday taking place on this month. But in the case of Buddhism, it's not only his birthday, on the full moon day in the Vesak, that is the 6th lunar month. On the full moon day, the 3 events in separate years, different years, that is, on the full moon day, more than 2,700 years ago, the Buddha was born a prince, Prince Siddhartha. He was born. At the age of 35, the Buddha attained enlightenment. He became full Buddha, attained enlightenment, full moon day, 35 years later. And then at the age of 80 years, when he lived for 80 years, he passed away. He entered Nirvana on the full moon day. So his birthday and the day of his enter Nirvana on the full moon day in the Vesak month. Not only that, the day of his great achievement, enlightenment, falls on the full moon day in the Vesak month. That's why it's quite appropriate for the Buddhists to celebrate same day that's called Vesak, the day of Vesak. Is it the same we call Buddhist Lent? It's different. Buddhist Lent is fixed in the rainy season. It's the 8th month of lunar calendar to the 11th month, when the monks are confined to one temple, not to travel. It's called Buddhist Lent, like your Ramadan. So, sir, because Buddhist Vesak Day is so important that United Nations has taken it, commemorated, make it so important, annually commemorated. So, can you tell us about the importance? Why do United Nations have taken it up? The United Nations, the body of the United Nations that recognize Vesak Day come from General Assembly. General Assembly of the United Nations in the year 1999. 1999, that is about 21 years ago. In the General Assembly, they adopt resolution proposed by more than 30 countries that Vesak Day, the day of Vesak, is recognized by the world body United Nations as the most significant event for the Buddhist world, and invite the non-Buddhist community around the world to join the Buddhists to celebrate Vesak Day. So as a result of this resolution, the world body allow the Buddhists all over the world to use facilities of the United Nations in its headquarters in New York and its branches around the world to be the venue of celebration together. It means that because of this resolution, the Buddhists are allowed to use facilities. For example, in Thailand, the UNCC, that is UN Conference Center of UNSCAP in Thailand. So we use the facility, the conference center, for celebration of Vesak every year since then. So this become the resolution, the outcome resolution. Why? The world body recognize the Vesak Day because in their document, it mentioned that because the Buddha, when he was born and preached the Dhamma, his teaching become the foundation of world civilization, spiritual development of spirituality in the world. The message of peace preached by the Buddha have bring peace to the world
for more than 25 centuries. The world body recognized the contribution of Buddhism to the world. That's why join the world to celebrate the Vesak Day. When we celebrate the Vesak Day, the significant event symbolize the celebration is called Vien Tien, candlelit procession. We carry the candle, the joss-sticks, and the flower in our hand, in our palms. We move around the Buddha horn 3 times around the clock. So 3 times we move around. And in the procession, it means people come together and close together, worship together, chant together in this atmosphere. So we have to cut off this part of celebration. It violates the rule of social distancing. So we celebrate the Vesak Day in the baseline event. That is, we observe the precepts that we can keep social distance to keep the 5 precepts. Sila, observe the precept, and we give offering to monks, dana, and we chant, we listen to the sermon at our home, at residence. We request the people not necessarily to come to the temple. If you like to listen to the sermon, for example, in my temple, I sit on the podium over there and live telecast through social media, to live telecast on the TV. People all over the country, all over the world can follow my sermon, Dhamma talk. So we encourage the monks all over the country to do the same thing. And the Department of Religious Affairs come to telecast my talk to be the symbol of this kind of practice of social distancing, celebrating our Vesak. So what I want to convey to the public is that we celebrate Vesak Day to honor the Buddha. To honor the Buddha, we can do 2 things. By offering Amisa Puja, by offering to the Buddha, that is to the Dhamma, the Sangha, offering to the Buddha with flowers, something like that. That is the material worship. But we can have another kind of worship we call Dhamma Puja. Worship by practicing his teaching. So emphasize this time by Dhamma Puja, practicing by following his Dhamma. Means you stay at home, practicing his Dhamma at home. Now practice the Dhamma from home. Great thanks to Venerable Professor Dr. Praprom Bandit. We really appreciate your time. Talk to us today. One of the very important day and being recognized, that is Vesak, or the Thai people call Visakha. So for this particular time, the Thai people and also the rest of the Buddhist countries, people cannot attend or doing that. But before we get into that, sir, so what is Vesak Day, sir? Vesak Day is the most important day in the Buddhist world. Just like Christmas Day in Christianity. In Mahayana country, that is in the northern part of Asia, they regard Vesak Day as the day of the Buddha Day. Because this Vesak Day, Vesak means the 6th month in the lunar calendar, 6 months of lunar calendar. So Visakha Puja in Thailand, Puja means worship. Worship in the 6 months of lunar calendar, Vesak. That means there were significant, very important events related to life of the Buddha in the 6th lunar month. That's why the Buddhists all together worship the Buddha in this 6th month, the 6th month of lunar calendar. What were the events related to the life of the Buddha? Most of the Buddhists think about his birthday taking place on this month. But in the case of Buddhism, it's not only his birthday on the full moon day in the Vesak, that is the 6th lunar month. On the full moon day, the 3 events in separate years, different years, that is, on the full moon day, more than 2,200 years ago, the Buddha was born a prince, Prince Siddhartha. He was born. At the age of 35, the Buddha attained enlightenment. He became full Buddha, attained enlightenment, full moon day, 35 years later. And then at the age of 80 years, when he lived for 80 years,
he passed away. He entered Nirvana on the full moon day. So his birthday and the day of his enter Nirvana on the full moon day in the Vesak month. Not only that, the day of his great achievement, enlightenment, falls on the full moon day in the Vesak month. That's why it's quite appropriate for the Buddhists to celebrate same day. That's called Vesak, the day of Vesak. Is it the same we call Buddhist Lent? It's different. Buddhist Lent is fixed in the rainy season. It's the 8th month of lunar calendar, the 11th month, when the monks are confined to one temple, not through travel. It's called Buddhist Lent like your Ramadan. So, sir, because Buddhist Vesak Day is so important that United Nations has taken it, commemorated, Yes. make it so important annually commemorated. So, can you tell us about the importance? Yes. Why do United Nations have taken it up? The United Nations, the body of the United Nations that recognize Vesak Day come from General Assembly. General Assembly of the United Nations in the year 1999. 1999, that is about 21 years ago. In the General Assembly, they adopt resolution proposed by more than 30 countries that Vesak Day, the day of Vesak, is recognized by the world body United Nations as the most significant event for the Buddhist world and invite the non-Buddhist community around the world to join the Buddhists to celebrate Vesak Day. So as a result of this resolution, the world body allow the Buddhists all over the world to use facilities of the United Nations in its headquarters in New York and its branches around the world to be the venue of celebration together. It means that because of this resolution, the Buddhists are allowed to use facility. For example, in Thailand, the UNCC, that is UN Conference Center of UNESCAP in Thailand. So we use the facility, the conference center for celebration of Vesak every year since then. So this become the resolution, the outcome of solution. Why the world body recognize the Vesak Day? Because in their document, it mentioned that because the Buddha, when he was born and preached the Dhamma, his teaching become the foundation of world civilization, spiritual development of spirituality in the world. The message of peace preached by the Buddha have bring peace to the world for more than 25 centuries. The world body recognize the contribution of Buddhism to the world. That's why join the world to celebrate the Vesak Day. When we celebrate the Vesak Day, the significant event symbolize the celebration is called Vien Tien, candlelit procession. We carry the candle, the joysticks, and the flower in our hand, in our palms. We move around the Buddha horn 3 times around the clock. So 3 times we move around. And in the procession, it means people come together and close together, worship together, chant together in this atmosphere. So we have to cut off this part of celebration. It violates the rule of social distancing. So we celebrate the Vesak Day in the baseline event. That is, we observe the precepts that we can keep social distance to keep the 5 precepts. Sila, observe the precept, and we give offering to monks, dana, and we chant, we listen to the sermon at our home, at residence. We request the people not necessarily to come to the temple. If you like to listen to the sermon, for example, in my temple, I sit on the podium over there
ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านณสมาคมชาวพุทธโลกที่กำลังรับฟังอยู่ดิถีวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนและเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษเนื่องด้วยสภาวะการปัจจุบันทำให้เราไม่อาจจัดงานวันวิสาขบูชาดังเช่นทุกปีได้ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอินเดียประเทศไทยหรือไม่ว่าที่ใดเชื่อว่าเรากำลังประสบสถานการณ์เดียวกันในระหว่างสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ทำให้ลำลึกถึงพระพุทธโอวาทที่ให้มุ่งเน้นปฏิบัติบูชาคือการน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติถือว่าเป็นการถวายสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประเสริฐกว่าการบูชาอื่นใดแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มที่คลี่คลายลงในบางประเทศหรือในหลายประเทศก็ขอให้ระลึกถึงพระปัจฉิมวาจาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ว่าวยธัมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทะแปลความว่าสังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้อีกไม่นานเราอาจใช้ชีวิตที่เรียกว่าปกติใหม่ก็ยิ่งต้องดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติและระลึกถึงส่วนรวมอยู่ทุกเมื่อในการรักษาตนเองและคำนึงถึงส่วนรวมในการช่วยเหลือกันและในการปฏิบัติตนอยู่ในวินัยพระปัจฉิมวาจาที่ได้ประทานไว้จึงเป็นธรรมอันประเสริฐที่พึงน้อมนำมาปฏิบัติในสถานการณ์นี้โดยแท้ขออวยพรแก่ทุกท่านและขอเชิญร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติดำรงตั้งมั่นในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะในการดำรงตนในสถานการณ์ปัจจุบันก็จะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเทินauspicious occasion, I would like to convey my respectful greetings to all the Sangha participants of this Global Buddhist Conference of 2020 and my blessings to all the organizers and the lay supporters who have made this possible, and wish my very best for the success of this conference. It's not easy. I don't find it particularly easy at all to use Zoom and all these modern messaging media, but there's little choice and it's better than nothing, and something to be grateful for. This is a global conference, so in this time when we can't travel around so easily, it does afford an opportunity for a sense of
harmony and togetherness and sharing and giving encouragement to each other. And the institution which is organizing this conference, the Lokuttara Buddhist Training Center, is one that in its name expresses the meaning of or the essential import of Visakha Puja. It's the we recollect the day on which the Bodhisattva realized enlightenment and realized the Lokuttara Dhammas. And those Lokuttara Dhammas are timeless, is a timeless Dhamma, and it's something that any one of us in this day and age can realize if we faithfully pursue the Eightfold Path which the Lord Buddha laid down for us. So I would just like to express my anumodana and appreciation for this event, and to wish that all of you will receive great benefit from it, which will help in your own practice of sila, samadhi, and panya, and in your efforts to propagate the Dhamma throughout Buddhist communities in every continent of the world. Thank you. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato blessings to all the lay lay Buddhists. So we are in unprecedented times. This week we'll be celebrating the Visakha Puja, and for the first time since I came to Thailand 40 more years now, we'll cancel
सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघर्ष सामग्री समगानं तपो सुखो। बुद्ध का जन्म सुखदायी है, सद्धम्म का उपदेश सुखदायी है, कल्याणकारी है, संघ में सांघिकता लाभकारी है, सुखदायी है, और एकता युक्त होकर सब जन मिलकर तप करना, सब जन मिलकर साधना करना, ये महान सुखदायी है, कल्याणकारी है। जैसा आप सब लोगों को पता है, यह बुद्ध वर्ष 2663 ये वर्ष बुद्ध जयंती संपन्न होने जा रही है। हर साल को हजारों लाखों के संख्या में इकट्ठा होकर ये बुद्ध पर्व एक त्योहार के समान उसको हम संपन्न करते थे, लेकिन इस साल को इस जगह का माहौल देखते हुए, इस जगह का चित्र देखते हुए सब जनों ने इकट्ठा होकर बहुसंख्या में बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करना ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि समाज में अलग अलग देशों में जो एक चिंता बनी हुई है, एक महाभयंकर के रोग के लक्षण से, जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, एक डरावना सपना सामने आता है, एक चिंता लगती है, भय लगता है, दुख होता है, शोक उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में हम बुद्ध जयंती सेलिब्रेट कैसे करें? तो इस पर एक सम्यक विचार से सोचा गया कि हम इस साल की बुद्ध जयंती ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे। जैसा इंटरनेट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, अलग अलग चैनल्स के जरिए हमने ये बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करने का तय किया है। और ये बुद्ध जयंती लाइव दिखाई जाएंगी। आप सब लोगों से अनुरोध है, इस बुद्ध जयंती का महापर्व, महाउत्सव हम उसका आनंद, उसका सुख अनुभव करें। इसलिए हमने ये लाइव देखने का एक मीडिया, एक प्रबंध किया है। तो इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन हम बुद्ध जयंती देख रहे हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है, मनुष्य इतिहास में एक उदाहरण, एक मिसाल, सिर्फ एक ही मिसाल इस दुनिया में है जो कि हम बुद्ध के जीवन का इतिहास देखते हुए, समझते हुए समझ सकते हैं। इस बुद्ध जयंती में भगवान बुद्ध का
जन्म, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं एक ही दिन में जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, उसी बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध के जीवन में घटित हुई है। इसलिए बुद्ध जयंती का महत्व बहुत ही अनन्य रूप से महत्वपूर्ण है। हो सकता है किसी का जन्म किसी तारीख पर हो जाए, किसी का मृत्यु भी उसी तारीख पर हो जाए। तारीख, महीना, जन्म का भी और मृत्यु का भी एक हो सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन का जो सर्वोत्तम ध्येय, उद्देश्य, जो अचीवमेंट जो है, ये तीनों भी घटना एक ही तारीख पर नहीं आ सकती है। ये जो है, ये बात सिर्फ भगवान बुद्ध के जीवन में घटित हुई है। भगवान बुद्ध बोधिसत्व की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम इस नाम से बोधिसत्व जन्म लेकर, उनका जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु नगरी में लिंबुनी वन में होता है। और वही बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पूर्णिमा के दिन सारनाथ में महाबोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व का लाभ पाते हैं, बुद्ध बनते हैं, समय समय बुद्ध बनते हैं। और बुद्ध बनकर इस जन्म का, जो इस संसार का जो भवचक्र है, जन्म मृत्यु का जो श्रृंखला है, उसको तोड़कर समय समय बुद्ध बन जाते हैं। वो बोध गया बुद्ध वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है, समय समय बुद्ध बनते हैं। तो ये समय समय बुद्ध बनने के बाद उन्होंने जो अपने पूर्व जन्मों में जितने भी कुछ पार मिटाए संपन्न की है बोधिसत्व की अवस्था में, अपने पिछले जन्मों में जो पार मिटाए उन्होंने परिपूर्ण की है, जो धम्म आचरण किया है, उसका पूरा का पूरा फल, उसका विपाक उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको समय समय बुद्धि का ज्ञान प्राप्त हो गया, समय समय बुद्ध बन गए और उन्होंने जन्म मरण का भव चक्र, मृत्यु चक्र उन्होंने तोड़ दिया। तो उन्होंने संसार से मुक्ति पा ली, उन्होंने संसार से निर्वाण पद प्राप्त किया, समय समय बुद्ध बने और ये दुख का भव चक्र, जन्म मृत्यु चक्र उन्होंने तोड़ दिया। ये घटना जो है किसी के भी जीवन में घटित होना असंभव है। ये सिर्फ जो बोधिसत्व अपनी पार मिटाए, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता,
इस तरह से त्रिविध 10 पारमिता यानी 30 पारमिता जब वो परिपूर्ण करते हैं और पारमिताएं परिपूर्ण करते हुए सम्यक संबुद्धि का ज्ञान, सम्यक संबुद्धि का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सम्यक संबुद्ध बनते हैं। और ऐसे बुद्ध का जन्म इस दुनिया में, इस संसार में, इस मनुष्य लोक में, देवता लोक में बड़ा ही महाकल्याणकारी होता है, बड़ा ही सुखदायी होता है मनुष्य और देवताओं के लिए, सभी सत्वों के लिए, प्राणियों के लिए एक महा शुभ अवसर, महाकल्याणकारी क्षण उनके जीवन में आता है। और ये सम्यक संबुद्ध अपने जीवन का जो भी कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है, जो भी पारमिताएं है, वो सब परिपक्व होने के बाद, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जो उनको सम्यक सम ज्ञान प्राप्त होता है, सम्यक सम ज्ञान ये सभी मनुष्य और देवताओं के हित के लिए, कल्याण के लिए जग में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जग में उसकी सिकवन अन्य सत्वों के लिए, अन्य मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए उसका शिक्षा देते हैं और अपने कुशल कर्म के प्रभाव से, अपने पारमिता के प्रभाव से, अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से उनको जन्म मरण का जो दुख का चक्र है, भवचक्र है, उसे मुक्त कराने में उनको, इसलिए सभी सत्वों को जन्म मरण से, दुख से छुटकारा पाने के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए ये बुद्ध की देशना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बुद्ध की देशना नीतिमत्ता, शील पर आधारित है, समाधि पर आधारित है, प्रज्ञा पर आधारित है। भगवान बुद्ध के शिक्षा का जो आधार स्तंभ है, शील है, समाधि है और प्रज्ञा है। जो भगवान बुद्ध बताते हैं, प्रज्ञा, समाधि और शील, ये जो 3 भाग है भगवान बुद्ध के शिक्षा का गाभा है, भगवान बुद्ध के शिक्षा का सार है, उसी को ही हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं और नोबल पाथ उसे कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा में, अपने धम्म में ये बताया है, मनुष्य के जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख से निवारण करने के लिए मार्ग है। ये जो 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी आर्य प्रतिपदा, ये जो 4 आर्य सत्य है, यही भगवान बुद्ध के शिक्षा का सार है, यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। मनुष्य के जीवन में दुख है, दुख अगर है तो दुख क्या है? अगर दुख है तो दुख के लिए कोई ना कोई कारण है, बिना कारण दुख नहीं हो सकता है। अगर जीवन में दुख है, उसका कारण है, तो उसका निवारण भी जरूर है। जहां पर कारण है वहां पर उसका निवारण भी होता है। जिसे हम कार्य होने की वजह से कार्य कारण भाव बनता है और कार्य कारण भाव ये भगवान बुद्ध के शिक्षा का मूल स्रोत है। और इसी स्रोत से भगवान बुद्ध ने दुख क्या है, दुख का स्वरूप क्या है, दुख का एक गहनता, गंभीरता क्या है,
उसके लिए कारण खोजा गया। अगर दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण अगर है तो उसका निवारण है, अगर उसका निवारण करना है तो उसके लिए मार्ग होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य, दुख समुदाय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, ये 4 आर्य सत्य की खोज की और इसी की शिक्षा धम्म के रूप में ये मनुष्य और देवताओं के लिए, ये दुख से छुटकारा पाने के लिए, निर्वाण पद पाने के लिए, अर्हत बनने के लिए भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा दी है। तो ये भगवान बुद्ध का धम्म जो है, जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, ये मनुष्य को केंद्र मानते हुए, मनुष्य को सेंटर मानते हुए, ये मनुष्य के लिए ये शिक्षा है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा में जो 3 ये कैरेक्टर्स है, जिसे हम 3 लक्षण कहते हैं, दुख, अनित्य और अनात्म, ये भी मनुष्य के ही जीवन में उसका लाभ हो सकता है, मनुष्य ही उसको जान सकता है। दुख क्या है, उसका स्वरूप, दुख का इलाज क्या है, उसको जाना जाता है। और ये निसर्ग का एक लक्षण है, ये तत्व है, एक नियम है। सभी कुछ अनित्य है, सभी कुछ परिवर्तनशील है, सभी कुछ क्षणभंगुर है, सभी कुछ बदलने वाला है। ये मनुष्य, सभी तत्व, सभी निसर्ग, ये सभी के लिए एक नियम जो है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ परिवर्तनशील है। ये तत्व भगवान बुद्ध ने अपने सम्यक संबोधि ज्ञान में खोजा गया है, उसको जाना गया है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, दुख में हर कोई उसकी अनुभूति कर सकता है, दुख जान सकता है, अनुभव कर सकता है। ये सब कुछ बदलने वाला है, बदलता है, उसको भी जानता है। लेकिन सब कुछ अनात्म है, सब कुछ अनात्म है, ये जानने के लिए मनुष्य के लिए बहुत बड़ी प्रज्ञा होनी चाहिए, बहुत बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समय ज्ञान होना चाहिए, समय विचार होना चाहिए। अगर ये समय विचार उत्पन्न न हो जाए तो मनुष्य अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कर्म कांड में फंस जाता है। ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा, इसके अंदर उलझ जाता है। और अज्ञान में फंसने के कारण वो जो दुख से छुटकारा कैसा पाना है, दुख क्या है, ये न समझते हुए दुख के भव चक्र में हमेशा हमेशा के लिए ये अंधेरे में आगे आगे बढ़ते रहता है। और इसी कारण उसको अनेक जन्म लेना पड़ता है। ये भव चक्र हमेशा के लिए चालू रहता है। सॉरी, भगवान बुद्ध के धम्म के अंदर ये जो 3 लक्षण है, दुख, अनित्य, अनात्म, उसको समझने के लिए, उसको अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए, उस पर एक स्वामित्व पाने के लिए भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है, वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग अगर हम उसके विभाजन करें तो एक विभाग उसका बनता है शील। शील का मतलब होता है सदाचार, सम्यक वर्तन, सम्यक आचरण, जो करने से मनुष्य के जीवन में दुख उत्पन्न नहीं होता है,
संकट उत्पन्न नहीं होता है, धोखा उत्पन्न नहीं होता है, अज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि मनुष्य एक इंसान बनता है, मनुष्य एक अच्छा मनुष्य बनता है और वह मनुष्य खुद की हिफाजत करता है और दूसरों को भी हिफाजत करता है। तो ये शील, शुद्ध जीवन पद्धति, शुद्ध जीवन मार्ग, शुद्ध जीवन आचरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य शील का पालन करे तो उसके काया से, उसके वचन से कोई भी नियम, कोई भी विनय, कोई भी शील नहीं टूटता है। तो जो लेकिन काय की शुद्धता होती है, वचन की शुद्धता होती है, लेकिन मन तो अशुद्ध ही रह जाता है। ये मन की भी शुद्धता होने के लिए भगवान ने एक मार्ग बताया है, उसे कहते हैं समाधि। समाधि मतलब कुशल चित्त की एकाग्रता और सजगता, उसको हम समाधि कहते हैं, सम्यक समाधि। जो सम्यक समाधि है वो मन को शुद्ध करती है, मन को वो परिशुद्ध करती है। अगर मन परिशुद्ध हो जाए तो आदमी के वचन शुद्ध होता है, आदमी का काय का कर्म शुद्ध होता है, जिसे कोई भी अकुशल कर्म नहीं होता है, अकुशल कृति नहीं होती है, न खुद के लिए हानि उत्पन्न होती है, न दूसरों के लिए हानि उत्पन्न कराता है। इस तरह से सम्यक समाधि से मन की शुद्धता होती है, मन के जो क्लेश है, मन के जो विकार है, मन के जो मलिनता है, वो समूल नष्ट हो जाती है, मन परिशुद्ध हो जाता है। अगर मन परिशुद्ध हो जाए, काय के कुशल कर्म होते हैं, वचन के कुशल कर्म होते हैं, मन के कुशल कर्म होते हैं, और वो मनुष्य दुख का जो कारण है, दुख का समुदाय जिसके अंदर लोभ है, आसक्ति है, तृष्णा है, वासना है, विकार है, अहंकार है, गर्व है, अज्ञान है, ये दुख का कारण समूलता से नष्ट कर देता है। और उसके अलावा मन में सभी सत्वों के लिए मैत्री उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है, और वो मनुष्य एक अच्छा मनुष्य बनकर, इंसान बनकर जिस तरह से खुद की हिफाजत करता है, उसी तरह से अन्य मनुष्यों की, अन्य सत्वों की वो रक्षा करता है, रक्षण करता है। तो इस तरह से कुशल कर्म उत्पन्न होने से सभी क्लेश विकार उसको जानते हुए उसको परिशुद्ध किया जाता है, उसको नष्ट किया जाता है। और ये जो काम है डिसीजन लेने का, उस पर अमल करने का, उस पर काबू पाने का, ये काम जो है वो प्रज्ञा से घटित होता है। जब प्रज्ञा उत्पन्न होती है तो प्रज्ञा ये सब काम करती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है। भगवान बुद्ध के धम्म के अंदर जो प्रज्ञा बताई जाती है वो सम्यक दृष्टि पर आधारित होती है, सम्यक विचार पर आधारित होती है, सम्यक कर्म पर आधारित होती है, सम्यक विचार पर आधारित होती है, सम्यक कर्मांत पर आधारित होती है। जो हम मानते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, तो यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सम्यक प्रज्ञा उत्पन्न कराता है। और सम्यक प्रज्ञा उत्पन्न हो जाए तो मनुष्य दुख से छुटकारा पाता है, दुख का अंत कराता है, सभी क्लेश विकार से मुक्त होता है, और सभी क्लेश विकार मुक्त होने से वो मनुष्य अरहत बनता है, निर्वाण प्राप्ति कराता है। और जब उसका आयुष्य पूरा हो जाता है तो फिर वो
निर्वाण प्राप्त व्यक्ति महापरिनिर्वाण अरहत बनकर परिनिर्वाण प्राप्त करता है। अगर बुद्ध है तो बुद्ध सम्यक संबुद्ध बनते हुए वो निर्वाण प्राप्त करते हैं, अरहत बनते हैं, और जब उनकी आयु उम्र पूरी हो जाती है तो महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध ने अपने सम्यक प्रयत्न से, अपने सम्यक प्रज्ञा से महानिर्वाण पद प्राप्त कर इस दुनिया से उन्होंने छुटकारा पाया है। तो यही दुख मुक्ति का संदेश, दुख मुक्ति का उपदेश सभी मनुष्य, सत्व, देवताओं और सभी महापुरुषों के लिए, महाकल्याणकारी महाजनों के लिए भगवान बुद्ध ने ये महा उपदेश दिया है। और यही महा उपदेश का महत्व भगवान बुद्ध की शिक्षा में अधोत्तरित किया गया है। तो हम भगवान बुद्ध, उनकी शिक्षा, उनकी धम्म शिक्षा की उपलब्धि जिसे हम निर्वाण करते हैं, ये सभी बातें हमें भगवान बुद्ध पर, भगवान बुद्ध के धम्म पर और भगवान बुद्ध ने बताई हुई शिक्षा पर आचरण करते हुए ये हमको सब प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हमें किसी की कृपा की, किसी की आशीर्वाद की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, आत्मदीप भव, खुद का दीपक आप स्वयं बनो, खुद का मार्ग आप खुद तैयार करो, खुद के मार्ग पर आप खुद चलो और भगवान बुद्ध ने बताया हुआ निर्वाण का मार्ग प्राप्त करते हुए इस दुख से, इस भव चक्र से छुटकारा खुद ही पा सकते हो। तो इसलिए भगवान बुद्ध की धम्म का शिक्षा, भगवान बुद्ध की धम्म की शिक्षा का आधार, उसका केंद्र बिंदु, उसका सेंट्रल पॉइंट मनुष्य है। और मनुष्य के सुख के लिए, मनुष्य के दुख मुक्ति के लिए मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने मनुष्य के मन जो है उसको केंद्र स्थान माना है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते, मनोपुब्बं गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन साचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदम्। इस गाथा में भगवान बुद्ध ने कहा है, मन ही सभी बातों का प्रधान है, मन ही सभी कर्म का आधार है। सभी प्रवृत्तियां मन में ही उत्पन्न होती है। जैसा कोई दूषित मन से वचन बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसके पीछे वैसा ही आता है जैसा गाड़ी का चक्का बैलों के पैरों पे चलता है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर एक सत्य बताया है, दुख, दुख का कारण और दुख का प्रवाह कर्म कैसा चलता है। भगवान बुद्ध ने इस दुख का छुटकारा पाने के लिए और एक गाथा में बताया है, सत्य बताया है, मनोपुब्बं गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन साचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। मन ही सभी बातों का प्रधान है, मन ही सभी बातों का मूल है, मन ही सभी बातों का कारण है। अगर कोई प्रसन्न मन से वचन बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसके पीछे वैसा ही आता है जैसा कभी अपनी साथ में छोड़ने वाली छाया अपने साथ चलती है। तो भगवान बुद्ध ने दुख तो बताया है, लेकिन दुख तक ही भगवान बुद्ध रुके नहीं है, दुख का पूरा निवारण भी बताया है। दुख है तो दुख से छुटकारा है, जीवन में दुख है तो जीवन में सुख भी आ सकता है। तो जीवन में सुख आने के लिए
भगवान ने दुख से शुरुआत करते हुए दुख का एंड कहा होता है, दुख का आखिरी पड़ाव क्या है? दुख का आखिरी पड़ाव है सुख। ये जीवन भगवान बुद्ध ने बताया है। दुख और सुख ये दोनों भी बातें भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में बताई है, अपनी शिक्षा में बताई है। इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा मनुष्य के मन पर आधारित है, मनुष्य के मन पर केंद्रित है। हर मनुष्य उसको पा सकता है, हर मनुष्य उसकी खोज कर सकता है, हर मनुष्य दुख से छुटकारा पा सकता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा सभी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जो ज्ञानी है, जो जो प्रयत्नवादी है, जो जो उत्साही है, जो जो एक अपना संकल्प लेकर, सम्यक संकल्प लेकर, सम्यक अधिष्ठान करते हुए सम्यक मार्ग पर चलता है, तो जरूर वो ज्ञान प्राप्त करेगा, कभी भी अधोगति, दुर्गति या दुख की ओर नहीं जाएगा। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा आज के बुद्ध पूर्णिमा के लिए सभी के लिए एक प्रदान है, सभी के लिए उसका एक महादान बुद्ध ने सभी मनुष्य को, देवताओं को दिया है। और भिक्षु संघ भी सभी के ऊपर एक अनुकंपा करते हुए, मैत्री करते हुए, एक प्रेम करते हुए, यही भगवान बुद्ध की दुख मुक्ति की शिक्षा, सुख की शिक्षा सभी के लिए भिक्षु संघ प्रदान करता है। सभी का मंगल हो, कल्याण हो, हित हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।